नमस्कार। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज मौजूद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर CS सेट्टी साहब। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये जो आपने बड़ा ऐलान किया है जहां पर आप 4 स्टार्टअप को फंड करेंगे, तो ये कितना बड़ा देखते हैं आप और इसके पीछे मकसद क्या है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? थैंक यू अनुराग, नमस्कार। सबसे पहले मैं थोड़ा SBI फाउंडेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फाउंडेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSR आर्म है। जो भी इम्पैक्टफुल प्रोग्राम्स है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स है, हम SBI फाउंडेशन के जरिए करते हैं। एंड लास्ट 18 मंथ्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने काफ़ी सारे काम कोविड रिलेटेड किया है, particularly in terms of creating the physical infrastructure both for the adult patients as well as children. We have created the wards, we have created the oxygen facilities, we have created the oxygen concentrators. Almost about लगभग 100 करोड़ रुपए हमने कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज में स्पेंड किया है फाउंडेशन के जरिए. Apart from that, some of the scientific programs are also undertaken, long lasting. For example, genome sequencing, COVID related virus ka genome sequencing we are doing in association with CCMB Hyderabad. Apart from that, foundation कई सारे flagship programs भी run करते हैं State Bank of India के लिए. For example, Youth for India program, which we do in the rural communities for livelihoods. And the second program which we do is Gram Seva for the village adoption. The third program which we, one of the most important program which we run is called the Center of Excellence for Persons with Disabilities. This 5 साल से ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम. इसमें PWD जो दिव्यांगन है उनके लिए जो भी solutions to make their life better, ये प्रोग्राम का मकसद है. अंडर दैट प्रोग्राम दिस ईयर इन एसोसिएशन विथ FISC विच इज ऑपरेटिंग अंडर द ब्रांड सोशल अल्फा, हमने ये प्रोग्राम कॉल्ड टेक्टोनिक अनाउंस किया है. ये प्रोग्राम का उद्देश्य है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में we will encourage the startups to engage themselves with finding assistive technologies for the persons with disabilities. अभी भी technologies available हैं, मगर कई सारे physical infrastructure, physical requirement and also technologies are generally imported now. Imported technologies में क्या है, after sale service का issues है and affordability का issue है. So a lot of people are not able to access this improvements in the assistive technologies. ये प्रोग्राम का उद्देश्य है to provide seed capital. Seed capital is very important because कोई स्टार्टअप के पास आइडिया है, बट वो आइडिया रियलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करना चाहते हैं. So that kind of incubation, that kind of accelerator program, ये टेक्टोनिक प्रोग्राम के द्वारा हम प्रोवाइड करना चाहते हैं. सर, तो इससे क्या माने कि जो डिसेबल लोग हैं उनको पेमेंट्स करने का भी तरीका बढ़ेगा क्योंकि वो नए इनोवेशंस आएंगे तो? So ये 4 areas we have identified. One is people with visual impairment, people with hearing and speech impairment, people with locomotion disabilities, people with developmental disabilities. These are the 4 categories we have chosen for this program, where we are asking the startups, identified startups, to come with an idea and develop solutions across. The idea is that we have to encourage the physical as well as financial inclusion, economic inclusion. Abhi most of these people with disabilities are not able to access the services which are physically made available, as well as technological solution, which may include the payment services also. Abhi bhi lot of payment service solutions have come for the people with visual impairment. What about others? And also the idea is not only to get the solutions which are affordable and can be widely adopted by millions of people. I think that is the idea. And कई सारे क्या होता है, स्टार्टअप जो आइडिया से आते हैं, if they don't get the seed capital,
they face what is called in the startup terminology valley of death. That means उनका idea मर जाता है. So at that time the intervention is required. This tectonic programs उद्देश्य है कि वो seed capital दे दी, उसका idea को आगे बढ़ा दे, और if they are able to develop a prototype in the initial stages, and then you make it them to access the wider venture capital, and they make their idea more viable. This is the idea of this program. सर ये काफी शानदार प्रोग्राम लग रहा है जिस तरह से आपने बताया। सर इसके अलावा भी, क्योंकि आपका वक्त काफी कम मिलता है, तो अब एसबीआई के ग्राहकों के लिए आपसे समझना चाहेंगे सर, जो आकर्षक ब्याज दरें आप दे रहे हैं, तो अब और कितने दिनों तक ये ब्याज दरें जारी रहेगी? उससे पहले अनुराग, थोड़ा दो शब्द इसके प्रोग्राम के बारे में भी आपके चैनल द्वारा कन्वे करना चाहता हूं मैं। ये प्रोग्राम में आई वांट मोर एंड मोर स्टार्टअप्स टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. We are launching the program today, and the applications can be applied. They start applying from today, and out of this application, a jury will be constituted. They will select 10 startups for their ideas, and Social Alpha will provide the incubation service to them, and also accelerated program for 3 महीने के लिए उनका accelerator program जारी रखेंगे. वो 10 स्टार्टअप में से, शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप में से 4 स्टार्टअप चुने जाएंगे. वो स्टार्टअप के लिए 15 लाख लगभग, ये प्रोग्राम के अंदर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन 1 करोड़ रुपए दे रहा है सोशल अल्फा के लिए, एंड दे विल रन दिस टेक्टोनिक चैलेंज प्रोग्राम. एंड 4 स्टार्टअप के लिए हर एक स्टार्टअप 15 लाख रुपया फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ग्रांट मिलेगा, एंड वो ग्रांट यूज करके 1 साल तक वो कोई इंक्यूबेशन प्रोग्राम रन करेगी सोशल अल्फा in association with SBI Foundation. And if their ideas come to prototype level, I think further support can be given by the Social Alpha or the startup ecosystem. I think this is a very wonderful program. आपका channel द्वारा हम popularize करना चाहते हैं ये program को, so that more startups can make use of this program. Thanks for giving this opportunity to Zee Television, Zee Business channel. Anurag, then as far as your question in terms of interest rates, right? You're talking about the interest rates. For the time being, I think the softer interest rate regime will continue. What we are seeing, Anurag, I also would like to share that there used to be post-festival, immediately festival के बाद जो consumption demand कम हो जाता है, credit offtake भी कम होता था. This is a general trend. बट इस बार हम देख रहा है कि वो जो क्रेडिट डिमांड है इतना शार्प फॉल नहीं हुआ है. वो दिखाता है कि कंजम्पशन डिमांड सस्टेन कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है. बट आई डोंट थिंक इट विल रिजल्ट इन इमीडिएट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट गोइंग अप. आई थिंक it is good time for the borrowers, particularly who are actually looking for long-term mortgages. I think the banking system and the financial system definitely helped to realize the dream of having their own home. मतलब सर आप बोल रहे हैं कि अभी निकट भविष्य में भी अगर कोई घर खरीदना चाहता है तो उनके लिए काफी बेहतर मौका है. जरूर, आई थिंक बेहतर मौका है. बहुत रियल एस्टेट मार्केट भी ठीक है और होम लॉन्चेस भी हो रहा है. कई बिल्डर्स नया होम लॉन्चेस कर रहा है. एंड अभी लॉन्ग टर्म लोन के लिए दिस इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी गुड. I think everybody should seriously look at locking up their dream home. Yes, sir. सर अभी आपने एक करार भी किया था एमएसएमई को लेंडिंग के, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि वहां पर कैसी डिमांड आ रही है, किस तरह का सिनेरियो है, कैसा पिकअप हो रहा है? अभी को लेंडिंग पार्टनरशिप हमने किया है. ये को लेंडिंग अरेंजमेंट्स आरबीआई ने, पहले को ऑरिजिनेशन मॉडल था, उसको काफी सारा रिफॉर्म करके, काफी सारा चेंजेस करके बहुत अभी बैंक फ्रेंडली एंड एनबीएफसी फ्रेंडली मॉडल लाया है आरबीआई ने. ये को लेंडिंग मॉडल में द आइडिया इज दैट द एनबीएफसी और एमएफआई हैव अ एबिलिटी टू रीच आउट टू द कस्टमर्स, करेक्ट, एंड द बैंक्स हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड द कैपिटल. ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ द को लेंडिंग इज दैट इफ बोथ बैंक्स एंड एनबीएफसीज वर्क टुगेदर, द इंटरेस्ट रेट व्हाट नॉर्मली एनबीएफसी चार्ज टू द कस्टमर, what we call blended rate कम हो जाएगा. Suppose 20% charge कर रहा है NBFC, and co-lending में even if you are able to reduce to 13-14% because of the blended rate, I think it is win-win for all the people. That means NBFC is getting the capital,
banks are able to lend to the last mile, and more importantly, the small borrowers, either it would be micro enterprises, small enterprises, they will be able to get the loan at a much cheaper rate than what they normally get from the NBFC. I think this is the co-lending model का objective है. And we have entered into partnerships both for small value loans up to 1 lakh rupees and also MSME lending up to 3 crore rupees. This is because all the loans which qualify for priority sector can be done under co-lending. And the partnerships we are expanding, we are bringing more and more NBFCs under the co-lending model. We are now currently working under the technology integration. Some of the small value loans we already have integrated. I think it is progressing. It will take some time because now the idea is that the end-to-end solution is what we are working. I feel that there is a good potential for co-lending model. There are several banks which are working. NBFCs are also interested in working with us. And I'm sure this co-lending model will help banks to lend more to these micro enterprises, NBFCs to bring down the rates of interest to the borrowers. सर सेकंड लास्ट सवाल होगा, टोकनाइजेशन की शुरुआत होने वाली है 1 जनवरी से, तो आप सबसे बड़े बैंक के रूप में इसे कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं और क्या इसकी जो तैयारियां हैं वो सभी फ्रंट पे पूरी होती हुई दिख रही है आपको? I think काफी सारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैव इम्प्लीमेंटेड द टोकनाइजेशन. मेरे ख्याल से 1 तारीख लुक्स गुड. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. एंड हमारा क्रेडिट कार्ड बिजनेस आप जानते हैं, द SBI कार्ड करते हैं, वो भी तैयार है ये 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट करने के लिए. मेरे ख्याल से आई थिंक देयर मे बी सम 1 or 2 weeks डिले, बट आई होप द इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स टोकनाइजेशन. तो आखिरी सवाल होगा, क्रिप्टो करेंसी की तो बातचीत काफी चली रही है, लेकिन उस पर रेगुलेशन बनने अभी बाकी है. लेकिन सर जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी आ रही है उसको आप कैसा देखते हैं? कितना बड़ा मूव होगा? किस तरह से ये पूरी तरह गेम चेंजर साबित होगा? But I think it's too early, Anurag, to talk about central bank digital currency. I think let us wait how it is going to evolve. I'm not able to immediately respond to this question, how it is going to change, because I think it's too early to talk about it. Thank you. इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for giving this opportunity.